हाँ तो बच्चों, आज हम स्टडी कर रहे हैं टू ग्रेटेस्ट फिगर की। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टाउन फिगर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सेंचुरी के दो महान फिगर्स हम की स्टडी करने जा रहे हैं। देख रहे हैं हाउ दे आर रिलेटेड विद दिस डे। आज के डे से उनका क्या संबंध था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप मेन कैंप माई स्ट्रगल, ये फर्स्ट बुक है जो कि हिटलर ने लिखी थी। हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है ये। तो मेन कैंप में बेसिकली हेटेड है टवर्ड जूज एंड द डे of 2 days remembered for the Mandela Day. Nelson Mandela was born on that day. आज के दिन पे में नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। The two figures were starkly different थे उनके अंदर, बहुत भिन्नता थी उनके अंदर। जैसा कि आपको पता है कि जो नेल्सन मंडेला was a great in favor of फेवर्ड नॉन वायलेंस, और हेटेड मोंगा थे वो थे हिटलर। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। द फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का कंट्रीब्यूशन जो था ड्यूरिंग द अपार्थाइड एरा, ए मैन वाज बोर्न इन 1918। he was named Nelson Mandela. His father was a polygamist. He had four wives थी उसकी, 4 पत्नियां थी उनकी। एंड अगर हम उसका देखें, he has a rich life. चीफ थे इसके पापा, नेल्सन मंडेला के पापा चीफ थे। His upbringing was tremendous. He has a big family and his brothers and sisters used to play with him a lot. बच्चे उनके साथ में खेलते थे, तो वही बड़े बड़े नेल्सन मंडेला। परंतु नेल्सन मंडेला लेटर ऑन they become critical to the political system of Africa which was apartheid जो सिस्टम था उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो गए। he became the member of African National Congress, African National Congress के मेंबर बने। and he fought the struggle of independence की स्ट्रगल के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। Today I am going to quote Nelson Mandela's first speech after the release. He was kept in jail in a banned island for 27 years. Any man who is that long for the same prison, he may have lost his balance, but extreme calmness prevailed throughout the Mandela's life. मंडेला की लाइफ में शांति बहुत है, पीस बहुत है, इसी बात करते हैं। एक्सट्रीम पीसफुल पर्सनालिटी थे। आफ्टर हिज रिलीज ही मेड हिज हेरोइक स्पीच। तो आज हम उसी एक्सपर्ट ले रहे हैं। वी आर कमेमोरेटिंग द डे इज कमेमोरेटेड फॉर हिज बर्थडे and I am remembering the great personality on earth. वो पर्सनैलिटी नेल्सन मंडेला हैं। and here I quote him his famous word. He opened the speech like that: I stand here before you not as a prophet but as a humble servant of you the people. Today we quote some of the sentences written by Adolf Hitler. Mein Kampf, My Struggle in English. If a man of genius belonging to the 20s of the last century were to arise from his grave today, he would find it more difficult to understand our present age than the contemporary boy of 15 years of age, who may even have only an average intelligence. तो 15 साल का बच्चा अगर उससे भी कम इंटेलिजेंस होगी, जो अगर 20 साल का कोई 20वीं सदी में अगर कोई बंदा मरा है और आज वो जिंदा हो जाता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। इवन जो है 15 इयर्स का किड्स भी प्रोफेस करता है, वो उतनी योग्यता को कंटेन करता है, हार्बर करता है जो कि उसके पास में है, तो परंतु उसके पास नहीं होगी। अगर वो 1920 में कोई आदमी मरा है, 19वीं सदी में कोई आदमी मरा है, तो टेक्निकल नॉलेज, करंट नॉलेज जो आज के चेंजेस हैं वो से नहीं पहचान पाएगा। इट इज़ हार्ड और नियरली इम्पॉसिबल फॉर हिम। हियर द Jews are compared with a 15-year-old boy.
तो ज्यूज को उसने कहा है कि दे आर ओल्ड फैशन, दे लैक नॉलेज, उनके पास नॉलेज नहीं है। दे बिलोंग्स टू द पास्ट एरा, वो पास्ट एरा से बिलोंग करते हैं, प्रेजेंट से उनका कोई सरोकार नहीं है। अब लगातार अटैक करता रहेगा। द सेम पैक ऑफ वॉल्स विच ए मोमेंट अगो जॉइन टुगेदर इन ए कॉमन अटैक ऑन देयर विक्टिम विल डिसॉल्व इनटू इंडिविजुअल वॉल्स as soon as their hunger has been satisfied। वही अब झुंड है भेड़ियों का, वो इकट्ठे हुए हैं, उनका एक पर्पज है, वो विक्टिम, किसी विक्टिम के लिए, किसी शिकार है उस पर अटैक करने के लिए वो आए हैं। अगर वो शिकार कर लिया फिर दोबारा अलग अलग चले जाएंगे। तो भेड़ी है यहाँ पर उन्होंने खैम, यहाँ पर तो जो मेन कैंप है जूस की कंपैरिजन भेड़ियों से की गई है। Where the two motives no longer exist, then the most brutal egotism appear, and these people who before had lived together in unity will turn into the swarm of rats that bitterly fight against each other। तो यहाँ पर जो सिमिली है वो यूज की गई रैट, रैट से सिमिलरिटी बताई गई है, जूस को रैट बताया गया है कि जो एक दूसरे से लड़ते हैं। तो इनमें कोई भी सोशल समझ नहीं है, इनके पास में जो बॉन्डिंग है वो नहीं है, ये सेल्फिश हैं, ईगोटिज्म दिखाई गई है। तो पूरी की पूरी कोशिश हिटलर ने यही की है कि इनको प्रूव करने का वर्थलेस, कि वो वर्थलेस हैं, इनकी वर्थ नहीं है। पूरे चैप्टर में, पूरी बुक में इन्होंने यही कहा है। अगेन द कल्चर विच द जू एंजॉयज टुडे इज द प्रोडक्ट ऑफ द वर्क ऑफ अदर्स एंड दिस प्रोडक्ट इज डिबेस्ड इन द हैंड्स ऑफ द जू। जो कल्चर है जो जू एंजॉय करता है और वो प्रोडक्ट है बहुत सारी पीढ़ियों का, पिछली पीढ़ियों का, जो सिर्फ उस कल्चर को अपना रहा है और वो ना सिर्फ वो यूज कर रहा है पर उसे डिबेस कर रहा है, उसे और भी गिरा रहा है, और भी खत्म कर रहा है, अपवित्र कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो कल्चर के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट बताए गए, जो कल्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगेन द जूइश इंटेलेक्ट विल नेवर बी कंस्ट्रक्टिव बट ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव। फिर उन्होंने कहा है जूइश इंटेलेक्ट है, जो बुद्धिमत्ता है, जूइश बुद्धिमत्ता है, वो कभी भी वो कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकती, वो डिस्ट्रक्टिव होगी, वो कभी भी सृजन नहीं कर सकती, वो विनाश ही करेगी, जब भी करेगी विनाश ही करेगी। दस Jew has never been a nomad but always a parasite battening on the substance of others। तो जू कभी भी नोमैड नहीं थे, गुमक्कड़ नहीं थे, नोमैड नहीं थे, वो पैरासाइट हैं, वो परजीवी हैं। पैरासाइट यूज्ड, वर्ड यूज फॉर परजीवी, परजीवी हैं जो कि दूसरों की रोटी पर जीते हैं, जो कि दूसरों के जीवन भोजन पे जीने वाला है आदमी, दूसरों पर जीने वाला आदमी पैरासाइट है। ठीक है। Schopenhauer once described when he spoke of the Jew as the great masters of lies। Schopenhauer ने जो कहा है ग्रेट मास्टर्स ऑफ लाइज, तो यहाँ पर हिटलर ने कंपेयर किया है, कंपेयर द जूज विद दोज विच bespoke lies, जो लाइज बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको कंपेयर किया, झूठ बोलने होता है। The kind of existence which he lived forces the Jew to the systematic use of falsehood। जो जिस तरह की वो जीते हैं, जिस तरह की वो एग्जिस्टेंस है उनकी, वो सबूत है इस चीज का कि वो फॉल्सहुड है, हर चीज झूठ है उनकी जिंदगी में। आगे चलते हैं। द इंटेलिजेंस ऑफ द इंडिविजुअल ज्यू द बेटर विल ही सक्सीड इन डिसीविंग अदर्स। जितना ही बुद्धिमान होगा ज्यू, हिटलर कहते हैं, उतना ही ज्यादा बड़ा धोखेबाज होगा, जितना बड़ा समझदार होगा उतना बड़ा धोखेबाज होगा। तो पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ द हिटलर्स अटैक इज बिकमिंग विशियस। अटैक खतरनाक होता जा रहा है। पूरी जब उन्होंने चैप्टर खत्म किया तो ज्यू in front of the eyes of the ordinary citizen was warmed, वो कीड़े मकोड़े हो गए। तो हिटलर ने चाहा एंड हिटलर इन्वेंटेड द इमेज एंड पीपल लिव्ड विद दिस इमेज। पीपल इस इमेज, उन्होंने इमेज बनाई और लोगों ने उस इमेज के साथ जीवन जिया, लोगों ने वो अत्याचार किए। विच वॉज इम्पॉसिबल इफ द पीपल वर अवेयर ऑफ द सिचुएशन। अगर सिचुएशन से अवेयर होते इम्पॉसिबल होता। द ग्रेटर द इंटेलिजेंस ऑफ द इंडिविजुअल ज्यू द बेटर विल ही सक्सीड इन डिसीविंग अदर्स। At the very early date, urged on by the desires to make their way in the world, the Jews began to cast about for a mean whereby they might distract such attentions as might prove inconvenient for them। तो उन्होंने कहा कि चैलेंज भी नहीं स्वीकार करते, जो चीज़ इनकन्वीनियंस ही फील करते हैं, जो काम नहीं करते, ये हमेशा उस काम से बचते हैं, काम चोर हैं, मुश्किल काम वो हाथ में लेते ही नहीं।
what could be more effective and at the same time more above suspicion than to borrow and utilize the idea of religious community. तो इससे आसान तरीका और क्या हो सकता था, उन्होंने रिलीजियस कम्युनिटी का सहारा लिया, उन्होंने एक रिलीजन कहा कि हमारा एक धर्म है. Here also everything is copied or rather stolen. यहाँ भी उनकी हर चीज कॉपी है या स्टोलन है. For the Jew could not possess any religious institutions which had developed out of his own consciousness. Religious system इनका अपना नहीं है, अपनी consciousness से नहीं निकला है, तो इनका धर्म भी नहीं है. The religious teaching of the Jews is principally a collection of instructions for maintaining the Jewish blood pure and for regulating intercourse between Jews and the rest of the world. तो किस तरह से वो अपने ज्यूज ब्लड को प्योर रखें और जो रेगुलेट करें इंटरकोर्स को. तो जो इंटरकोर्स है वो फिजिकल रिलेशन बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड है. तो इंटरकोर्स हो ज्यूज और ताकि ज्यूज ब्लड प्योर रहे उनका, ज्यूज के साथ ही मैरिज, ज्यूज के साथ ही मैरिज हो और नॉन ज्यूज के साथ में मिंगल ना हो, नॉन ज्यूज के साथ में मिंगल ना हो. दैट इज से देयर रिलेशन विद नॉन जूज, उनका रिलेशन ना हो नॉन जूज के साथ में. बट एट द टाइम क्राइस्ट वाज नेल्ड टू द क्रॉस फॉर हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द जूज, whereas a modern Christian enter into party politics and when elections are being held they debase themselves to beg for Jewish votes. जब क्रिस्ट को नेल पर टांगा गया, क्रॉस पर टांगा गया, तो जूज ने टंगवाया. जो क्रिश्चियन हमारी पार्टीज हैं जब वोटों के लिए जाती है तो उन्हीं के पास वोट मांगने जाते हैं जिन्होंने हमारे गुरु का कत्ल किया. फॉर हिम लैंग्वेज इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ हिज इनर थॉट्स बट रादर ए मीन्स ऑफ क्लॉकिंग देम. उन्होंने कहा कि लैंग्वेज भी ये इनको छुपाने का काम के लिए यूज करते हैं, ये लैंग्वेज भी एक्सप्रेशन का वे नहीं है. लैंग्वेज का प्राइम मोड जो प्राइम है, जो प्राइमरली फंक्शन है लैंग्वेज का, वो एक्सप्रेशन है, पर ये एक्सप्रेशन के लिए यूज नहीं करते. They want to cloak, ये क्लॉक करते हैं, अपने आप को ढकते हैं, छुपाते हैं लैंग्वेज बाय. As long as the Jew had not been succeeded in mastering other people, he is forced to speak their language whether he likes it or not. जब तक जूस दूसरे लोगों को डोमिनेट नहीं करते, जब लोग उनका कब्जे में नहीं आ जाते, तभी तक ये उनकी लैंग्वेज बोलते रहेंगे, चाहे वो उसकी पसंद करें ना करें. But the moment that the world would become the slave of the Jew, it would have to learn some other language. पर जिस दिन हम गुलाम हो गए जूस के, तब ये अपनी लैंग्वेज चलाएंगे, फिर हमारी लैंग्वेज मानेंगे, हमें इनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. Esperanto for example, so that by this means the Jew could dominate all the more easily. फिर ये एस्पेरेंटो अपने पे थोप देंगे, फिर हमें इनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, हमारे पे डोमिनेट करते, हमें आती नहीं होगी, हमारे पे डोमिनेशन हो जाएगी. The first Jews came into what was then called Germania during the period of the Roman invasion, and as usual they came as merchants. During the turmoil caused by great migration of the German tribes, the Jews seem to have disappeared. जर्मन में मर्चेंट बनकर आए, पर जैसे ही डिप्रेशन आया, ये वो कायर थे जो भाग गए, जर्मन छोड़कर भाग गए. You are seeing clearly that Adolf Hitler is pinpointing, targeting the Jews in an effective way. He really used this hatred speech towards Jews, and really people, for the notion formed by Hitler, people clang to it. People इसके साथ में जुड़ गए, people ने इसको पकड़ लिया, लोगों ने इसको पकड़ लिया, people clang. His famous speech on February 11, 1990, just after his release, I stand here before you not as a prophet but as a humble servant of you, the people. Your tireless and heroic sacrifices have made it possible for me to be here today. I therefore place the remaining years of my life in your hands. और culmination था speech का. During my lifetime, I have dedicated myself to the struggle of African people. I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, and this big if, it is an ideal for which I am prepared to die. तो उन्होंने कहा कि
पहले the first draft was written like that, it is an ideal which I hope to live for and to achieve. ये वो आइडियल हैं, ये वो आदर्श हैं जिनके लिए मैं जीना चाहता हूँ. I hope to live for, उनके लिए मैं जीना चाहता हूँ, and to achieve, और उनको अचीव करना चाहता हूँ. But if needs be a line, this line was not added in the first draft, but he has to speak the line in front of the magistrate, and the magistrate that time was not kind to black people. His colleagues were imprisoned along with Nelson Mandela. Nelson Mandela के साथ में colleague जो थे वो भी कैद थे, and he is going to speak on behalf of them all. उनके behalf पे नेल्सन मंडेला बोलने जा रहे थे. When he wrote the speech, there was no word but if needs be. When he handed the draft and shown it to his colleagues were terrified. Colleagues डर गए, because if the draft remained intact, अगर ये draft intact रह जाता, बिल्कुल बिना छेड़छाड़ रह जाता, they could lose their lives. उनकी life जान जा सकती थी. They could be hanged हो सकते थे. Then they requested Nelson Mandela to change the culminating remarks, culminating lines, and at that time he was suggested that he became really white. It was impossible for him to hide his feelings. His feelings was reflecting through his persona. उसके persona के through उसकी personality reflect होती थी, and he was a true man, और true man था, and he was not afraid of the death से afraid नहीं था. नेल्सन मंडेला कोई डर नहीं था death से. He can live for a day, an hour, a second, a minute, no matter, but it is impossible for him to compromise his principles. To compromise his principles was impossible for him to do. बहुत नामुमकिन था. But they pushed him to change those lines, and he added, but if needs be. दोनों ने तीन शब्द ऐड किए, but if needs be, अगर जरूरत पड़ी तो. The first draft was without those words. So great personality, we remember him for his bravery, the brilliant vision, the visionary leadership, and a true non-violent personality. The world still remembers him, and he really was a master of all the skills which were gifted by the nature to any superhuman. सुपरह्यूमन को जो पावर दी गई वो पावर नेल्सन मंडेला हावर करते थे, क्वालिटी थी उनके पास में. The second one, the stalking different one personality was Mein Kampf. He was totalitarian. He believed in proving his supremacy, and the supremacy was shown through the atrocities of others. उन्होंने कुछ अत्याचार किए, उन्हीं अत्याचारों की कहानी है. And his story, his autobiography was published as Mein Kampf. Mein Kampf उनकी autobiography है हिटलर की, जिन्होंने सीरियल वाइज उन्होंने शो किया किस तरह से he spread the hatred toward Jews, and he used this autobiography as a tool to spread the hate spread करने के लिए उन्होंने इसका यूज किया. I am quoting him again and again to prove that really he was on the another corner. He was standing on the another corner, completely different from Nelson Mandela. While Nelson Mandela was celebrating his 7th birthday and the Mein Kampf was released, it was a coincidence that book was released on 18th July, the birth of the great nation father. तो मेन कैंप जो है 1925 में पब्लिश हुई. नेल्सन मंडेला 1918 में बॉर्न होते हैं. आई एम कोटिंग हिटलर्स फेमस book, one and the sole creation of Hitler, Mein Kampf, My Struggle. In German, Mein Kampf stands for My Struggle.